यस। दे दें, खुल रहा है। बता दीजिएगा बच्चों को कि लाइट गई थी, इसकी वजह से मसला आया था, ताकि बच्चे जो हैं वो उनको लगे कि हाँ टीचर का टेक्निकल इशू है, ऐसे टीचर की मर्जी में नहीं चलना सब कुछ। ये किसने ऐसा लिख डाला, खतरनाक किस्म का आ जाएगी वैसे थोड़ी देर में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? हसान इमरान, अब्दुल बासित, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके बेटा, हम माजरत ख़्वाह हैं। आपको पता है कि लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से टेक्निकली इशू हो गया था ये। ठीक है, हम दोबारा वहीं से कंटिन्यू करते हैं, वहीं से दोबारा जो है शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं इसका कि हमने दोनों दरख्वास्त लिख ली है, दोनों ख़त लिख लिए, दोनों आपको कॉपी में करना है काम। ओके, अब आप स्टडी पैक अपना खोल दीजिए, पेज नंबर 25 यानी 25। तफहीमी पैराग्राफ, जैसे कि आप शुरू से करते हुए आ रहे हैं, इसे भी आपने इसी तरह करना है। मैं इसकी बुलंदख्वानी कर देती हूँ, आपको पढ़ा हुआ होगा आपने, दोबारा पढ़ लेती हूँ। रेडियम एक किस्म का मादा है जो मुख्तलिफ धातुओं में पाया जाता है। रेडियम का अजीब कमाल यह है कि इसमें से मुसलसल रोशनी और गर्मी निकलती रहती है, फिर भी इसका वज़न नहीं घटता। रेडियम का हासिल करना बेहद दुश्वार है। एक तो इसलिए कि जिन धातुओं में पाया जाता है वो बहुत कम मिकदार में दस्तयाब होती हैं। दूसरे इस वजह से सैकड़ों, अच्छा ये देखिए जिसमें जो आपको पता है ख़त कशीदा अल्फाज हैं, उसके मायने भी लिखने होंगे। आप मैं बता दी जाती हूँ आपको मायने, ताकि आपको मुश्किल ना हो अल्फाज के मायने लिखने में। ठीक है, दुश्वार यानी मुश्किल, बहुत कम मिकदार में दस्तयाब होती हैं यानी मैसर होती हैं या मिलती हैं। दूसरी इस वजह से सैकड़ों मंदात में से ज़रा सा रेडियम निकलता है। रेडियम से सिर्फ रोशनी हासिल नहीं होती, बल्कि ये बात ख़तरनाक फोड़ों का भी बेनज़ीर इलाज है। बेनज़ीर बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना हो, जिसकी कोई नज़ीर ना हो। इसके साथ में सख्त नुकसानात भी पोशीदा हैं। मादाम क्यूरी अपना हासिल किया हुआ रेडियम साथ रखती थी, नतीजा ये हुआ कि उनके जिस्म पर ज़ख्म हो गए। चूहों पर उसका तजर्बा किया गया तो उसके बाल झड़ने लगे और कुछ दिन बाद वो मर गए। यानी इंतहाई ख़तरनाक किस्म की धात है ये। इंसानों पर यह असर हुआ कि उनके जिस्म पर आंवले पड़े, फिर ज़ख्म हो गए। बिनाई पर भी सख्त मुज़िर असर पड़ा, मुज़िर नुकसानदेह। ठीक है, अब इसके मुताबिक, इस पैराग्राफ के मुताबिक आपने सवालात के जवाब देने, इधर उधर से नहीं ढूंढना कुछ भी। आपको कुछ भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके स्टडी पैक में आपका ये पैराग्राफ मौजूद है। इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए और फिर सवालात के जवाब दीजिए। रेडियम क्या है? ठीक है बेटा, आपने अभी ज्वाइन किया है तो इसमें कोई मसला नहीं है। आपको मैंने वही सवाल बताए हैं कि दो सवाल जो हैं आपका ख़त जो है और दरख्वास्त जो है वो दोनों आपने कॉपीज़ पे लिखना है, और उसके बाद तफहीमी पैराग्राफ जो है वो स्टडी पैक में ही करना है। ठीक है, पहला सवाल आपका क्या है? रेडियम क्या है? आपको पता है रेडियम एक किस्म का मादा है जो मुख्तलिफ धातुओं में पाया जाता है। मुख्तसर लिखिएगा, ज़रूर तफसील से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या रोशनी और गर्मी से निकलने से किसी चीज़ का वज़न कम होता है? नहीं। ठीक है, रेडियम हासिल करना बहुत मुश्किल क्यों है? क्योंकि जिन धातुओं में पाया जाता है वो बहुत कम मिकदार में दस्तयाब होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी धातुओं से बहुत थोड़ा सा रेडियम हासिल होता है।
रोशनी के अलावा रेडियम से क्या फ़ायदा हासिल होता है वो आपने इसके अंदर लिखना है। सवाल नंबर 5 आपका है, इंसानों पर रेडियम का क्या बुरा असर होता है। आपको पता है जिसम पे आंवले पड़ जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं और जख्म पड़ जाते हैं, जख्म के बाद फिर वो कैंसर भी बन सकते हैं। अब आ जाते हैं खत कशीदा अल्फाज की तरफ। जो आपको अल्फाज के मायने मैंने आपने बताए थे उसी के मुताबिक आपने जो है मायने लिखने हैं। ठीक है, अल्फाज क्या है? दुश्वार। दुश्वार के मायने क्या हुआ बेटा? मुश्किल। मैंने बताया था ना अभी आपको, दस्तयाब, मयसर या कोई चीज़ मिलना। ठीक है, बेनज़ीर वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, बेमिसाल या जिसकी कोई मिसाल ना हो। उसके बाद लफ्ज़ है पोशीदा। पोशीदा के मतलब है छुपा हुआ। फिर लफ्ज़ है आपका मुजिर। मुजिर सेहत कहते हैं ना, मुजिर माने होता है नुकसानदेह। ठीक है, अब ये आपका काम स्टडी पैक जो आपका मुकम्मल हो चुका है बेटा। तमाम काम नीट एंड क्लीन कीजिएगा। आपको पता है जैसे कि आपको हर टीचर बता रही है कि स्टडी पैक के नंबर हैं, आपको पहले भी क्लास में बताया जा चुका है। कंप्लीशन ऑफ वर्क है और क्वालिटी ऑफ वर्क है। कंप्लीशन ऑफ वर्क यानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सॉरी मुकम्मल काम होना चाहिए आपका, पेंसिल से कोई वर्क नहीं होना चाहिए, तमाम काम इंक पेन से होना चाहिए। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ वर्क यानी नीट एंड क्लीन हो और आपके हाथ से किया हुआ हो, किसी और ने वो काम नहीं किया हो। ठीक है, शाहजेन रेहान, ठीक है, आप सही से जवाब दीजिए। उसके बाद तख्लीकी काम और तमसील नुमाई। बेटा ये दोनों काम आपने, ये भी कापी कापी में जाएंगे आपके काम। तख्लीकी काम क्या है? बिजली से चलने वाली चंद बेहद कारामद अशिया की तस्वीर चस्पा करें, कम अज़ कम 5, और उनके बारे में चंद जुमले भी तहरीर करें। बेटा 5 चीज़ों की आपने, जो इलेक्ट्रॉनिक अशिया आपके इस घर में इस्तेमाल होती हैं, बिजली से चलने वाली चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है और फ़ैन है, फ्रिज है, टेलीविज़न है, जो भी आप चाहें वो आप उसकी तस्वीर लगाएंगे। ठीक है, बनाएंगे नहीं, लगाएंगे, और उसके मुतालिक 2-2 जुमले तहरीर करेंगे कि आपने इससे किस तरह इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं। वॉशिंग मशीन है, इस्त्री है, जूसर ब्लेंडर वगैरह है। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ जो आपको पसंद हो, कोई 5 चीज़ों की तस्वीर आपने लगानी है कॉपी के अंदर और उनके मुतालिक 2-2 जुमले तहरीर करने हैं। तख्लीकी काम है ये आपका। उसके बाद तमसील नुमाई की तरफ आ जाते हैं। आपके ख्याल में एक मिसाली तालिब इल्म में वो कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए कि वो माशरे का अहम फ़र्द बन सके। अपनी जमात के सामने अपनी ख़ैरत का इज़हार कीजिए। चूँकि आपकी जमात नहीं, इसलिए आपने अपनी कॉपी में लिखना होगा। तमसील नुमाई एक सफ़े की होनी चाहिए कम अज़ कम, और बिल्कुल सॉलिड जो है, इसमें जो है बिल्कुल अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल हो और मुनासिब अशार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसके साथ। आपने उसके अंदर कॉपी के अंदर इसको लिखना है। ठीक है, समझ गए बात को? हेडिंग डालनी तमसील नुमाई की, एक तरफ हेडिंग डालेगी तख्लीकी काम की, बाकी तमाम काम आपका कॉपी का मुकम्मल हो जाएगा। कॉपी भी और स्टडी पैक भी आपने 21 को जमा करवाना है, 26 से पहले पहले, 25 से पहले पहले। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? 25 के बाद कोई भी जमा नहीं करेगा फिर आप लोगों को। इसलिए बेहतर है अगर आप चाहते हैं कि आपको नंबर मिले और आपका काम अच्छे से हो और आप याद करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई मुश्किल ना हो, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा 21 को ही जमा करवा दीजिए। दोनों चीज़ें, तमाम स्टडी पैक का काम मुकम्मल कीजिए और कॉपी का काम भी मुकम्मल कीजिए। दोनों चीज़ काम मुकम्मल करने के बाद आपने उसको जमा करवाना है 21 को। ठीक है, अब अगला लेक्चर जो कल का लेक्चर था वो आपको पता है कि आपकी स्टडी की पाकिस्तान स्टडीज़ की यानी एसएसटी की टीचर जो है वो लेंगे आपसे। ठीक है, सोशल स्टडीज़ के टीचर हैं आपकी मिस सुमेरा, वो आपसे लेंगे। इसलिए इस लेक्चर तक हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। अपनी टीचर भरत नसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
Assalamu alaikum students, welcome to the class. Now I have to announce one thing that I will take your period on Thursday tomorrow. Second period of Miss Farhat. उर्दू का पीरियड कल मैं आपका लूँगी, कल लास्ट क्लास होगी, ठीक. Now I am starting the topic from lesson number 7, tourism. Now the topic that was remaining on the last class, that was Ibn Battuta. So beta, today we have to cover about Ibn Battuta, Christopher Columbus, and third one, Marco Polo. So you have to listen them very clearly. These persons are the explorers and travelers who travel the world, who discover the things. Okay. Now फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द इब्न बतूता. आज का लेक्चर बहुत गौर से सुनना है बेटा, ये सारी हिस्ट्री से रिलेटेड है. और वन थिंग इज़ मोर, उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लाइक अ स्टोरी सुनाऊंगी, जैसे इब्न बतूता के बारे में या मार्को पोलो या क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में. तो हमने 3 एक्सप्लोरर्स को आज कंप्लीट करना है. मैं हर एक्सप्लोरर को 10 मिनट्स दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा काफ़ी टाइम जो है ये चला गया है, तो आपने बहुत एक्टिव रहना है. नाउ अबाउट इब्न बतूता. Now, beta, chapter number 7. Ibn Battuta was a great traveler and explorer. He was born on February 24, 1304 in Tangier, Morocco. Tangier is a city, Morocco is a country in Africa. And he died in 1378 Morocco. He is best known for one of the greatest travelers in history. He was a Muslim traveler. Now the introduction about Ibn Battuta. He was born on 24 February 1304 AC in Tangier, Morocco in Africa continent. His full name was Abu Abdullah Ibn Battuta. He was a great Muslim traveler. He received his religious and literary education in his native city, यानी जहाँ वो born हुए थे. He wanted to learn, and his desire for learning led him to long travels. He started the journey at the age of 19. At the age of 19 and traveled for about 30 years. He visited countries of the world and he covered the distance about 120,000 kilometers. Now beta, it was his voyages or journey or travels, like from 1325 to 27 जो रेड लाइंस आपको शो हो रही हैं, इन्हीं उन्होंने पहले यहाँ पे अपना जर्नी स्टार्ट किया. फिर 1330 टू 1332 ये ग्रीन लाइन्स है इनका, सऊदी अरब साइड पे कीनिया वगैरह गए. फिर हमारे पास पर्पल लाइन्स हैं 1332 से 46 तक, इंडिया में, ईरान में, टर्की आप देख सकते हैं मैप में. फिर ये जो येलो लाइंस हैं ये वापस जो है अपने ही एरिया में आ गए थे, टेंजर मोरोको इन अफ्रीका में. तो ही वाज टोटल वोएजेस, या आप समझ लें उनका एक जो सफ़र है, हम मैप के थ्रू उसको लर्न कर रहे हैं. नाउ इज ट्रेवल्स और वोएजेस, यानी उनका जो सफ़र था. फर्स्ट ऑफ ऑल ही रीच्ड अरेबियन पेनिनसुला एंड परफॉर्म्ड हज, यानी व्हेन ही स्टार्टेड हिज जर्नी ही first performed Hajj, and he traveled through Asia Minor. Asia Minor include the countries like Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, East and West Pakistan, Brunei, Cambodia, Malaysia, or Singapore and Indonesia. So and Russian Turkestan and came to India. इन इंडिया मोहम्मद तुगलक, जो उस वक्त दिल्ली डायनेस्टी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ के जो सुल्तान थे मोहम्मद तुगलक थे इंडिया में. तो showed a high respect and appointed him a काजी. काजी कहते हैं जज को और मैजिस्ट्रेट को, यानी अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग इस्लाम के यानी जो शरई रूल्स होते हैं ना इस्लाम के, उसके अकॉर्डिंग जो हम फैसला करते हैं, यानी आलिम समझ लें आप, ठीक. तो ही वॉज अपॉइंटेड एज जज और मैजिस्ट्रेट और अ काजी that was responsible for taking the decisions according to Islam. Now he sent as
एम्बेसडर टू चाइना, यानी उनको चाइना भेजा गया. ड्यूरिंग द जर्नी हिज शिप वाज wrecked, इनका शिप जो है उसमें प्रॉब्लम हो गई थी. सो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग टू दिल्ली, वो कहाँ चले गए? ही वेंट टू मालदीव्स एंड वेयर ही आल्सो अपॉइंटेड एज काजी. देन ही विजिटेड श्रीलंका, ढाका, जावा एंड रीच चाइना. फिर चाइना आ गए. फिर आफ्टर ट्रेवल इन चाइना ही वेंट टू हिज होमलैंड थ्रू सुमात्रा, जावा, कैलिकट, अरबिया, सायरा एंड इजिप्ट. यानी डिफरेंट कंट्रीज को ये ट्रैवलिंग करते रहे एंड ही ऑब्जर्व मैनी थिंग्स. 2 years later he restarted his travels and visited Syria and Sudan. On return he posted as काजी in Morocco, यानी जो फ्रॉम यानी मोरक्को में बॉर्न हुए थे अफ्रीका में. ये कंट्री मोरक्को कंट्री है अफ्रीका में. तो वहाँ से ही वेंट टू फर्स्ट सऊदी अरब. वहाँ पे हज परफॉर्म करने के बाद डिफरेंट कंट्री से वह ट्रैवल करते हुए कहाँ पहुँचे? वापस इन मोरक्को. And Ibn Battuta wrote about all the places he visited in his book Safarnama. Safarnama has great historical importance. यानी इनकी बुक जो उन्होंने लिखी थी ट्रैवलॉग. He described the events of India in detail and has mentioned about the generosity of Sultan Muhammad Tughlaq. उनकी जो सखी उनके बारे ही मेंशन किया उन्होंने. He also has written about China, that it was a peaceful country, क्योंकि वो चाइना भी कहते. its roads were safe, paper currency were introduced here, the Muslims in China enjoyed full religious freedom, their cases were decided by the qazis and most of them were traders. फिर इब्ने बतूता books of traveler is a valuable historical document. He died in 1378 AC and was buried in Tangier, Morocco in Africa. He buried in the same place where he was born. So that was the whole story about the इब्ने बतूता. सो बेटा यहाँ पर हमारे पास ये टॉपिक रह गया था कल वाला लास्ट. अलबरूनी के साथ पढ़ाना था मुझे इब्ने बतूता. तो उसका जो पेज नंबर है आपका स्टडी पैक में, ये स्लाइड की आप वो स्क्रीनशॉट लें. और ये पेज नंबर 35 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. तो ये क्वेश्चंस जो हैं अपने स्टडी पैक में आपको ये शो कर देती हूँ. पेज नंबर 35, इसका होमवर्क हाथ के हाथ करा के आगे बढ़ूंगी. ये यहाँ पर आपने इसका नोट कर लिया होगा. पेज नंबर 35 रिलेटेड टू इब्ने बतूता. अब क्वेश्चंस टू मैं आपको शो कर दूँ, फिर हम इसका आंसर्स डिस्कस करते हैं. 1 मिनट. दिस वन पेज नंबर आपका 35 है. क्वेश्चन नंबर है व्हाट हैज़ इब्ने बतूता टू से अबाउट चाइना. यानी चाइना के बारे में इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी है, बताया है, वो लिखना है. फिर राइट द डिटेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ द इब्ने बतूता. अब ये यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पेज पेस्ट कर सकते हैं. जो जर्नी मैंने आपसे डिस्कस की है आप उसको अपनी वर्डिंग में शॉर्ट कर लिख सकते हैं. तो आप ये आंसर ये इसमें ही लिख लें. अगर स्पेस कम है तो आप यहाँ पे पेज पेस्ट करके लिख लेगा. जितना भी उनका जो ट्रेवल्स है ना, जर्नी है, यानी किस कंट्री में गए, कहाँ से गए, वो आपने यहाँ लिखना है. तो अब इसके लिए हम फिर जा रहे हैं अपनी स्लाइड्स पर टू डिस्कस द आंसर. बट बिफोर दैट लुक एट द ब्लैंक्स दैट वाज रिमेनिंग. 33 तक तो हमारी रिलेटेड थी इब्ने अल-बैरूनी तक. यहाँ पर आए पेज नंबर 34 पर. यहाँ पे नंबर 4 ब्लैंक देखें. नंबर 1 इब्ने बतूता ट्रैवलॉग डैश, यानी उनकी जो बुक थी सफ़रनामा. सफ़रनामा हैज़ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस. फिर इब्ने बतूता वॉज बरीड इन, कहाँ बरीड है वो? टेंजर, मोरक्को, जहाँ वो पैदा हुए थे, टेंजर, मोरक्को. फिर नंबर 6 इब्ने बतूता विजिटेड डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड डिस्टेंस कवर्ड अबाउट 120,000 किलोमीटर. एंड Ibn Battuta was died in 1378 AC. Ibn Battuta was died in 1378 AC. ठीक. अब हम जाते हैं now. You can write the travels or journey of Ibn Battuta from this points. He went to he performed Hajj, then he went to the Asia Minor, Russian, Turkestan, या India. फिर he went to India, he appointed as Qazi and sent to China. Then he moved to Maldives and appointed as Qazi. Then he back to China and then he traveled through Sumatra, Java, Calicut, Syria, Egypt, and through the Syrian Sudan he went back to the Morocco. तो ये आप सारे ट्रेवल्स इनके बारे में लिख सकते हैं. ठीक. नाउ what he has to said about China, he also has written about China
that he was a peaceful country, its roads were safe, paper currency were introduced here, the Muslim in China enjoyed full religious freedom, their cases were decided by qazis and most of them were traders. तो आप इसको अपनी वर्डिंग में करके लिख सकते हैं. आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ऑन पेज नंबर 35 और पेज क्वेश्चन नंबर 4. ब्लैंक्स भी डिस्कस कर ली. अब इसके बाद में आई एम मूविंग टुवर्ड्स द Marco Polo. Now, this one topics, tourism, lesson number 7. Another two explorers we are studying about, Marco Polo and Christopher Columbus. Now, who was Marco Polo? Marco Polo was also an explorer and traveler. He was born in Venice, Italy in Europe. This belonged to the continent Europe. And he died in January 8, 1324 in Venice city in the country of Italy in Europe. He is best known for European traveler who went to China and the Far East. Now beta Far East countries include Afghanistan and Bangladesh, Bhutan and East and West Pakistan. So he went these countries. Now his biography. Marco Polo was a merchant and he was a trader and explorer who traveled through the Far East and China for much of his life. यानी उनका जितना टाइम था चाइना में या फार ईस्ट कंट्रीज़ में गुजरा, जो मैंने आपको बताया है, जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, ब्रुनेई, कैम्बोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये फार ईस्ट कंट्रीज़ हैं. तो बेटा हिज स्टोरीज वर द बेसिस फॉर व्हाट मच ऑफ यूरोप न्यू अबाउट एंशिएंट चाइना. यानी कि जिनकी भी स्टोरीज थी जो उन्होंने चाइना के बारे में लिखी थी, तो वो जो एंशिएंट जो पीपल्स थे ना यूरोप के, वो उन स्टोरीज को चाइना के बारे में जानने के लिए पढ़ा करते थे. ठीक. ही लीव फ्रॉम 1254 to 1324. मार्को पोलो ही वॉज बोर्न इन वेनिस, इटली in 1254. वेनिस वॉज अ वेल्दी ट्रेडिंग सिटी एंड मार्कोज फादर वॉज अ मर्चेंट. यानी उनके अब्बू भी कौन थे? ट्रेडर थे. ही वॉज अ कॉन्टेम्पोररी ऑफ इब्ने बतूता. यानी कॉन्टेम्पोररी कहते हैं सेम टाइम को, यानी इब्ने बतूता भी उसी टाइम पे थे और ये भी उसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम. ठीक. नाउ द जर्नी ऑफ मार्को पोलो. मार्को पोलो की पूरी स्टोरी है कि मार्कोस पोलो फादर एंड अंकल थे हु वांटेड टू ट्राई टू समथिंग डिफरेंट. तो दे वांटेड टू ट्रेवल ऑल द वे टू चाइना एंड ब्रिंग द गुड्स डायरेक्टली बैक टू वेनिस. यानी वो चाइना जाना चाहते थे, वहाँ से गुड्स ब्रिंग करना चाहते थे. दे थॉट दे कुड मेक देयर फॉर्च्यून दिस वे. नहीं वो अपने नहीं इस तरह अपने आप को नहीं अपने लिए फ़ायदा करना चाहते थे. तो इट टुक देम 9 years बट दे फाइनली मेड इट होम. यानी उनको टाइम लगा. फिर मार्को फर्स्ट यानी पहले वो दोनों उनके फादर एंड अंकल गए थे, फिर वापस आ गए थे. बट जब सेकेंड टाइम गए तो मार्को पोलो जो उनके नेफ्यू थे, इनके मार्को पोलो के फादर, इनके जो अंकल थे, चचा थे और उनके अब्बू थे, तो उनके साथ मार्को पोलो first left to China when he was 17 years old. He was a young boy when he went to China with his uncle and father. So he traveled there with his father and uncle. His father and uncle had made the Mongol एम्परर कुबलाई खान. उस वक्त वहाँ का जो मंगोल एम्परर था वो कुबलाई खान था. ड्यूरिंग देयर फर्स्ट ट्रिप टू चाइना ही टोल्ड हिम दे वुड रिटर्न. यानी हम वापस आ जाएंगे. उन्होंने उनको ये कहा था कि हम वहाँ से रिटर्न हो जाएंगे. तो कुबलाई खान वॉज अ लीडर ओवर ऑल ऑफ चाइना एट दैट टाइम. तो इट टुक मार्को पोलो 3 years टू गेट टू चाइना. तो चले गए थे वो लोग चाइना. फिर अलॉन्ग द वे ही विजिटेड मैनी ग्रेट सिटीज एंड सो मैनी साइट्स इंक्लूडिंग द हॉली सिटी ऑफ जेरूसलम, द माउंटेन्स ऑफ द हिंदू कश, पर्शिया एंड द गोबी डेजर्ट. So he met a lot of different types of people and had many adventures. Marco lived in China for many years and learned to speak the language. He traveled throughout China as a messenger and spy for Kublai Khan. Kublai Khan ने उसको as a ambassador hire किया था. ये नहीं spy किससे कहते हैं? ये government officers होते हैं who appointed by the government to collect the information about the people. तो लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो ऑफिसर्स हायर किए जाते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर स्पाई कहलाते हैं. तो ही वॉज अ स्पाई हायर बाय द कुबलाई
Khan. So he even traveled far to the south to where Myanmar and Vietnam are today. During this visit, he learned about different culture, food, cities, and peoples. Now he saw many places and things that no one from Europe had ever seen before. क्योंकि he belonged to Europe, वो यूरोप से belong करते थे, तो चाइना में उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी जो उन्होंने यूरोप में नहीं देखी थी. ठीक, Marco Polo was fascinated by the wealth and luxury of the Chinese cities and Kublai Khan's court. It was nothing like he had experienced in Europe. यानी यूरोप में उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था. तो everything from the food to the people to the animals like orangutans and rhinos. यानी जो orangutans होते हैं ये ह्यूमन लाइक ऐप होते हैं, इंसान नुमा बंदर कहते हैं, और राइनोस कहते हैं हम गेंडे को. तो वर न्यू एंड इंटरेस्टिंग, यानी ही वॉज ऑल्सो अमेज्ड बाय द एनिमल्स दैट ही सॉ इन द चाइना. So after 20 years of traveling, Marco along with his father and uncle decided to head home to Venice. फिर घर उन्हें वापस अपने होम आने का सोचा. तो they left home in 1237 and finally returned in 1295. आफ्टर फ्यू ईयर्स, उससे कुछ सालों बाद, आफ्टर रिटर्निंग होम, जब वो लोग चाइना से वापस आ गए थे वेनिस में, तो वेनिस फॉक्ड अ वार विद द सिटी ऑफ जिनोवा. जिनोवा भी कहाँ पे, जो इटली कंट्री थी ना, वहाँ पे वेनिस और जिनोवा दोनों सिटीज थी. तो बेटा मार्को वॉज पुट अंडर अरेस्ट इन 1298. क्यों अरेस्ट हुआ था? ही वॉज अरेस्टेड फॉर कमांडिंग अ वेनिशियन गैली इन अ वार अगेंस्ट जेनोवा. जेनोवा से अगेंस्ट वो एक शिप को कमांड कर रहे थे, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था. While he was under arrest, Marco told detailed stories of his journeys to a writer named Resticello, who wrote them all down in a book called The Travels of Marco Polo. The Travels of Marco Polo became a very popular book. After the fall of Kublai Khan, the Ming dynasty took over China. So in his travelogue, इनकी जो सफ़रनामा था, बुक थी ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, ही हैज रिटन अबाउट द हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम एटसेट्रा ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज इन डिटेल. He was freed from jail in 1299 and then after prison Marco returned to Venice where he died in 1324 AC. यानी आखिर में जेल से भी प्राइजन कैद से बाहर आने के बाद वो वेनिस दोबारा आ गए थे, वहीं उनकी डेथ हुई इन 1324 AC. So that was the story of the Marco Polo. Now moving forward to the next story of the Marco Polo voyages. आप देख सकते हैं जो रेड लाइन शो हो रही हैं, ये इन कंट्रीज में ट्रैवलिंग की इन्होंने. इंडिया में भी गए, चाइना में भी गए, ठीक, सुमात्रा में भी गए हैं, अफगानिस्तान से भी होते हुए गए, ठीक. तो ये सारे इनके जर्नी है, ट्रैवल है, वॉयज है, सफ़र है. नाउ द थर्ड वन, क्रिस्टोफर कोलंबस. अब मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, थोड़ा ये स्टोरी भी आप इसको जल्दी जल्दी सुनिएगा, फिर मुझे 10 बजे काम स्टार्ट करवाना है इन दोनों का. क्रिस्टोफर कोलंबस occupation, he was also explorer, born in 1451 in Genoa city in Italy in Europe, and he was also European. Died in May 20, 1506, best known for discovering America. अच्छा, oh sorry, okay, 1 minute. See the slides. Tourism, then Marco Polo and Christopher Columbus. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मैं वो आपको अब आपको स्लाइड शो हो रही हैं, अब हो रही है बेटा स्लाइड शो, मुझे टाइप करके बताएं. दिस वन मार्को पोलो, इट्स बायोग्राफी, his journey,
मार्को पोलो को एक बार और शो कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीन शूट ले लें। ये मुझसे असल में वो, मुझे ये भी टाइप करके बताएं क्या आपको इब्ने बतूता की स्लाइड शो हुई थी? इस बायोग्राफी, इस हिज जर्नी, यानी कैसे चाइना गए, फिर चाइना में उन्होंने चीज़ों को नोट किया, फिर वो वापस आ गए थे। नाउ इस voyage, नाउ इब्ने बतूता की भी स्लाइड शो कर दूं, हो सकता है वो भी इब्ने बतूता वो इब्ने बतूता की स्लाइड शो कर रही हूँ, दिस वन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। His introduction: he was born in Tangier, Morocco. He was named Abu Abdullah ibn Battuta. His introduction: his voyages, then his voyage और ट्रैवल यानी का सफ़र, यानी इब्ने बतूता सबसे पहले हज पर गए थे। अरबियन पेनिनसुला, पेनिनसुला एक मतलब जो सऊदी अरब है उसके बारे में बात हो रही है, और जो जियोग्राफिकल फीचर्स के कह रहे हैं पेनिनसुला। Now it's homework. बेटा अब आपको स्लाइड शो हो रही है ना? वोएज कहते हैं सफ़र को या ट्रैवलिंग को, सफ़रनामा समझ लें आप। वोएज बोलूँ या जर्नी बोलूँ या सफ़र बोलूँ या मैं ट्रैवल बोलूँ तो वो एक ही बात है, ठीक। अब आज का लेक्चर जो ये वाला है क्रिस्टोफर कोलंबस का, ये स्क्रीनशॉट ले लिएगा बेटा। नाउ क्रिस्टोफर कोलंबस वाज एक्सप्लोरर। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा जा रहा है तो मैं थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा भी ले लूँगी, 5 मिनट्स। क्रिस्टोफर कोलंबस हैं, ही वॉज एक्सप्लोरर, ही वॉज बॉर्न इन जेनोवा इटली, ही डाइड इन मई 20 1506। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर डिस्कवरिंग अमेरिका, ठीक। अब तो आपको स्लाइड से हो रही है ना? बेटा कंप्यूटर पे कैसे लेते हैं? अब्दुल बासित मोबाइल है, पिक्चर खींच लें आप कंप्यूटर स्क्रीन की। अच्छा अब आगे बढ़ें। अब क्रिस्टोफर कोलंबस, टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको भी पढ़ना है हमने। अच्छा मूविंग फॉरवर्ड, बायोग्राफी। क्रिस्टोफर कोलंबस इज द एक्सप्लोरर हु इज क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरिंग अमेरिका। उनको ये क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने अमेरिका लैंड को डिस्कवर किया, मगर ऐसी बात नहीं है कि वो उनके जाने से पहले वहाँ कोई गया नहीं था। तो ऑफ कोर्स देयर वर ऑलरेडी पीपल लिविंग इन अमेरिका एट दैट टाइम, वी कॉल नेटिव अमेरिकन, यानी जो इलाके पुराने लोग कहलाते हैं वो नेटिव्स होते हैं। तो देयर इवन वॉज अ यूरोपियन लीव एरिक्सन हु हैड बीन टू अमेरिकाज बिफोर, यानी उससे पहले भी लीव एरिक्सन वहाँ गए थे। मगर हम क्यों उनको क्रेडिट दे रहे हैं? हाउ एवर इट वॉज कोलम्बस वोएज, यानी कोलम्बस का सफ़र था, डेट वोएज सफ़र को कहते हैं, डेट स्टार्टेड द एक्सप्लोरेशन एंड कोलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकाज, यानी वहाँ पे जो एक्सप्लोर चीज़ों को एक्सप्लोर किया या चीज़ें वहाँ से लाए थे क्रिस्टोफर कोलम्बस बैक टू स्पेन। और कॉलोनाइजेशन कहते हैं यानी लोग रहना शुरू हो गए, कॉलोनी आबाद हो गई, लोग रहना शुरू हो गए, यानी वहाँ लोगों की आबादी या पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग आफ्टर द वोएज या ट्रैवल ऑफ क्रिस्टोफर कोलम्बस। तो
Columbus was born in Geneva in Italy in 1451. He later lived in Lisbon city है ठीक, where he worked as a trader, यानी वहीं पर ही यूरोप में ही he learned how to make maps and navigate a ship, यानी he was a navigator, उनको ship direct करना या move करवाना आता था. तो Columbus and his brother Bartholomew knew that there were great riches to be had in China and East Asia. They wanted to come China and Asia. However, traveling over land by the Silk Road was dangerous and the sea route around Africa seemed much too long. He and his brother thought that कि हम अगर सिल्क रोड से जाएंगे तो वो भी डेंजरस है, और अगर हम अराउंड अफ्रीका मूव करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है. तो कोलंबस थॉट ही कुड सेल स्ट्रेट टू चाइना. उन्होंने सोचा हम सीधा चाइना जाएंगे बाय क्रॉसिंग द अटलांटिक ओशन. ही थॉट दैट कि अगर हम स्ट्रेट मूव करेंगे तो हम अटलांटिक ओशन में चले जाएंगे. तो ही वुड टर्न आउट दैट कोलंबस वॉज रॉन्ग, यानी ये साबित हुआ कि वो गलत थे. The earth was much larger than he thought, and there was another land, the Americas, between Europe and Asia. यानी दुनिया तो बहुत बड़ी है, यानी बिटवीन यूरोप एंड एशिया के दरमियान भी कोई प्लेस थी, दैट वाज अमेरिकाज, यानी नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. नाउ आई एम स्टार्टिंग द वॉयेजेस ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी उनका सफ़र जो था, उनकी जो जर्नी थी कहाँ से स्टार्ट हुआ कि कोलंबस स्पेंड ईयर्स ट्राइंग टू कन्विंस समथिंग टू पे फॉर हिज वॉयेज, यानी ही वाज ट्राइंग दैट समवन गेव मनी फॉर द, जितना भी खर्चा होना था उनका जो सफ़र में, उनको कोई उसको पे कर दे, यानी फाइनेंशियल वो एक पर्सन को फाइंड आउट कर रहे थे. बट ही फर्स्ट ट्राई टू गेट किंग जॉन टू ऑफ पुर्तगाल टू पे फॉर हिज जर्नी. उन्होंने पहले उनको कन्विंस करने की कोशिश करी किंग जॉन को पुर्तगाल के, मगर उन्होंने मना कर दिया. बट द किंग वॉज नॉट इंटरेस्टेड. फाइनली ही वॉज एबल टू कन्विंस क्वीन इजाबेला एंड किंग फर्डिनेंड ऑफ स्पेन टू पे फॉर द ट्रिप. जो स्पेन के किंग थे, किंग फर्डिनेंड और क्वीन इजाबेला, वो मतलब दे वर रेडी टू फाइनेंस द कोलंबस. तो ही सेट सेल ऑन August 3, 1492 with 3 ships named the Ninta, Pina and Santa Maria. The voyage was, उनका सफ़र बहुत long and difficult था. The voyage was long and difficult. At one point his men threatened to mutiny and wanted to turn back. यानी बहुत ज़्यादा थक गए थे, परेशान हो गए थे वो लोग, उनको यहीं था कि हम वहाँ कहीं पहुँच पाएंगे. तो Columbus promised them he would turn back in 2 days if they did not find land. तो उन्होंने ये सोचा हम वापस चले जाएंगे अगर हमें कुछ नहीं मिला. तो on October 12, 1492, land was spotted. He found some place. It was a small island in the Bahamas that Columbus would name San Salvador. He met natives there that he called Indians. यानी उनको जो place मिली वो बहामास की थे एरिया था, उसको उन्होंने सैन सल्वाडोर का नाम दिया और उनको कहा जो पर्सन है वो इंडियंस हैं. ठीक, because he was convinced that he had landed on island of the coast of East Asia. वे समझते थे कि हम जो है एशिया पहुंच गए. He named his island West Indies. उन्होंने नाम दिया कि ये इंडिया से रिलेटेड आइलैंड्स हैं. तो he also visit other islands in the Caribbean such as Cuba and Hispaniola. यानी इन प्लेसेस पर भी इन्होंने वहाँ पर ये गए थे. ठीक, अच्छा, हिस्पैनियोला जो स्पेस है ये जगह है नॉर्थ अमेरिका में. ठीक, तो बेटा आफ्टर अ 5-week stay Columbus went back. He was given a warm welcome in Spain and he was treated as a hero. Columbus also brought tobacco and potato seed from this island. यानी वहाँ से कुछ वो क्रॉप्स भी लेकर आए. एंड उनके उसके बाद यानी टोटल इन हिज लाइफ ही डिड 4 voyages, यानी 4 बार उन्हें सफ़र किया था नॉर्थ अमेरिका में बिटवीन 1492 एंड 1504. यानी ये जितना भी टाइम पीरियड है, क्रिस्टोफर कोलंबस मेड 4 voyages फ्रॉम स्पेन टू द लैंड्स विच ही लेटर कॉल्ड द न्यू वर्ल्ड. ऑन हिज फर्स्ट voyage he explored parts of Cuba and Hispaniola in 1492 and 1493. Then from 1493 to 1496 he continued to explore those regions and also ventured to Puerto Rico and Jamaica. On his third voyage from 1498 to 1500 he sailed along the northern coast of South America. On his final journey
In 1502, Columbus explored the coast of Central America. But Columbus died on May 20, 1506. He died thinking he had discovered a shortcut to Asia across the Atlantic Ocean, but he never knew that what an amazing discovery he had made. Yani, throughout his life, Christopher Columbus did not knew that he did not went to Asia. उन्हें पता ही नहीं चला जो एशिया और चाइना जाना चाहते थे, वो सोच रहे थे कि मैं चला गया था चाइना और मैं इंडिया में भी हो आया, बट बेटा वो चाइना और एशिया गए ही नहीं. वो जहाँ गए थे वो कौन सी प्लेस थी? दैट वॉज अमेरिका. आफ्टर हिज लाइफ ही वॉज क्रेडिटेड, उनकी लाइफ के बाद ये पता चला कि ही डिस्कवर द अमेरिका. ही नेवर वेंट टू यानी वो जो है चाइना और एशिया गए ही नहीं थे. ठीक, यानी ही डिस्कवर्ड अमेरिका but he did not went to Asia, but he thought that in his life he went there. Now he was a Columbus voyages. आप देख सकते हैं फर्स्ट ब्लू और सेकंड वॉयज रेड से शो हो रहा है, फिर थर्ड, फिर फाइनल है फोर्थ वॉयज. Now your homework, Marco Polo and Christopher Columbus, page number 36 and 37. योर होमवर्क फॉर टुडे इज, मैं अभी काम समझाऊंगी तो बेटा मैं थोड़ा वर्क ले रही हूँ आप लोगों का. होमवर्क जो है टॉपिक मार्को पोलो एंड क्रिस्टोफर कोलंबस, पेज नंबर 36 एंड 37. अब 36 एंड 37 और उससे पिछला वाला जो था 35, इन 3 पेजेस का मैंने आज आपको वर्क होमवर्क दिया है. नाउ मूव टुवर्ड्स द होमवर्क. ये काम में डिस्कस कर रही हूँ, यहाँ देखें. मार्को पोलो पर आए. मार्को पोलो व्हेन एंड वेयर मार्को पोलो वाज बोर्न, ये आप लिख सकते हैं कि मार्को पोलो किधर और कहाँ पैदा हुए थे. फिर व्हेन एंड व्हाई मार्को पोलो वाज अरेस्टेड, ये क्वेश्चन है. राइट द जर्नी ऑफ मार्को पोलो. पहले मैं क्वेश्चन शो कर रही हूँ बेटा, फिर मैं स्लाइड पे जाकर खुद क्वेश्चन से आपसे रिलेटेड डिस्कस कर लूँगी. तो ये सारे क्वेश्चन देख लें. हाउ डिड कोलंबस रीच वेस्ट इंडीज, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिज जर्नी. ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन है, इसके आंसर से रिलेटेड देख रही हूँ मैं, स्लाइड पर जा रही हूँ. ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर मैं पढ़ूंगी और स्लाइड से आपसे डिस्कस कर रही हूँ, आप वहाँ देखें. शो हो रही होंगी आपको स्लाइड. दिस वन मार्को पोलो पे आ गई हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है व्हेन एंड वेयर. Marco Polo was born in 1254 in Venice, Italy. तो when and where was born का आंसर हो जाएगा आपका. फिर why and when Marco Polo was arrested, क्यों और कब वो अरेस्ट हुए थे. यहाँ पर he was arrested in 1298 and he was arrested because he was arrested for commanding a Venetian galley in a war against Genoa. तो अब यहाँ पे लिखेंगे Marco Polo was arrested in 1298 and he was arrested for commanding a Venetian galley in a war against Genoa. फिर राइट अबाउट द जर्नी ऑफ मार्को पोलो. तो ये जो जर्नी ऑफ मार्को पोलो आपको शो हो रहा है बेटा, आपने इसके बारे में इसको शॉर्ट करके आपने आंसर देना है. यहाँ पे थोड़ी स्पेस हमारे पास कम है, तो आप इसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसको ये जर्नी पूरा कंप्लीट है, इसको शॉर्ट करके अपना आंसर बना सकते हैं जो आपको स्लाइड्स में शो हो रहा है. ठीक, फिर हाउ डिड कोलंबस रीच वेस्ट इंडीज, अब इनके भी जर्नी लिखनी है. तो क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से उनका जो वॉयज स्टार्ट हुआ है, आपने बताना है कि हाउ क्रिस्टोफर कोलंबस स्टार्टेड एंड हाउ ही वेंट देयर. तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि कोलंबस ने पहले कन्विंस करने की कोशिश करी, बट
किंग जॉन ने उनको जो है डिनाई कर दिया था, फिर किंग फर्डिनेंड एंड क्वीन इजाबेला उनको स्टार्टेड हुए, फिर वो शिप्स से स्टार्ट किया था उन्होंने, शिप्स थी उनकी नीना, पिंटा एंड सेंटा मारिया। तो फिर ये उसके थ्रू मूव होते हुए उनका वो डिफ़िकल्ट था, फिर जो मूव करते हुए वो पहुँचे कहाँ पर, 12 अक्टूबर 1492 में। तो वो जो आइलैंड था वहाँ बहामास, जो वहाँ बहामास में उन्होंने एक आइलैंड डिस्कवर किया था सेंट सेल्वेडर, फिर उन्होंने उसको पीपल्स को इंडियन का नाम दिया, उसको वेस्ट इंडीज़ का नाम दिया। तो इस तरह ये यहाँ तक, यानी जहाँ जब वो वेस्ट इंडीज तक पहुँच जाएंगे तो आपने वहाँ तक ही आंसर बताना है। यानी आप बताएंगे कि ये जो पैराग्राफ है ऑन October 12, 1492, इसमें अपनी वर्डिंग में कर कर शॉर्ट कर कर आपने लिखना है कि ही on October 12, 1492 land was spotted. This was the island in Bahamas. Columbus would name San Salvador, फिर he made the native Indians and he named this place as a West Indies। तो उस तरह आप आंसर बना के इनका जर्नी यहाँ तक लिखेंगे कि वो कैसे वेस्ट इंडीज तक गए। ठीक, तो ये आज आपका होमवर्क हो गया पेज नंबर 35, 36 और 37 तक का। और सही है बेटा, जो कल क्लास होगी उसमें मैं डिस्कस करूँगी वास्को डे गामा रह गए हैं, नज़ीर साबिर हैं और लास्ट टॉपिक है, तो वो इंशाअल्लाह ताला मैं कल कवर करवा दूँगी। और एक अनाउंसमेंट और है कि जो आपका सबमिशन ऑफ वर्क है स्टडी पैक का, वो आपने 21 दिसंबर यानी 21 दिसंबर से स्टार्ट करना है सबमिट करवाना, और लास्ट डे 26 है। मगर ज़रूरी नहीं है कि आप लास्ट डे सबमिट करवाने आएँ, आप फर्स्ट डे तक ही सबमिट करा दें जल्दी से काम कंप्लीट करके, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक, ओके बेटा, आई एम सेइंग यू अल्लाह हाफिज़, आई विल मीट यू अगेन ऑन टुमारो इंशाल्लाह। ओके बेटा।
Assalamu alaikum students. Today we have to start exercise 10.2, in which question number 1 part A and B is already done. Now we are going to start question number 1 part C. Question number 1 part C. The question is that quadrilateral MNOP, in which MN is equals to 4 centimeter, OP is equals to 3.8 centimeter, PM is equals to 4.5 centimeter. Now two angles are given, angle M which is 55 degree and angle P which is 105 degree. Now students, in this case it means we have three sides and two angles. The situation is that three sides and two angles. So we can construct a triangle. We can construct a triangle if three sides and two angles are given. So students, how can we construct a quadrilateral when this condition is given? First of all, just make a rough sketch. The rough sketch will be four-sided figure. Just make a four-sided figure. Note, chapter number 13 is not included. Yes, you have to complete this work in your maths copy. There is only one copy and you have to complete all the work in maths copy. But make sure make a title page of algebra, geometry and maths portion, so it is convenient to you. Okay students, so how can we make a rough sketch? Just take two angles are given, angle M and angle P. So just take it as a base, M and P as a base, in which angle M is given to you which is equals to 55 degree. Angle P is given to you which is equals to 105 degree. But students, make sure it makes a sequence, that if you are following the sequence of clockwise, so after M it is M, after M it is N, then O. So it should be write it as M N O P. अगर आपके पास वैल्यू ऐसे गिवन है, फॉर एग्जाम्पल आपने वैल्यू ऐसे पुट कर दी P O M N P O, it means it is not correct. You have to follow the sequence. So you have to follow the sequence. Clear? M N O P. We are taking M and P as a base because it has given angles. Yes, chapter number 13 is mentioned in your syllabus, but we are not completing chapter number 13 right now. We will start chapter number 13 in the next slot. Due to shortage of time, chapter number 13 is not included in second periodical. Chapter number 10 is the last chapter. Clear? Now students, what we have to do? The given length of M and N is 4 centimeter and OP is given which is 3.8 centimeter and PM is given which is 4.5 centimeter. So we have to take a baseline which is P and M equals to 4.5 centimeter. So first of all, we have to draw a line segment.
have to draw a line segment of 4.5 centimeter. MP 4.5 centimeter. Now after this we have already done these type of quadrilateral. When the angles are given, so we have to draw the angle by the help of protractor. So on point M you have to mark the given angles. MN is equals to 4 centimeter, angle M is equals to 55 degree, angle P is equals to 105 degree, then OP is equals to 3.8 centimeter and PM is equals to 4.5 centimeter. Now PM is done, so just cut it. Then the next is you have to make 55 degree. So on point M you have to make 55 degree. Just mark that point and join the line by the help of ruler. Name them as X. So we can consider that this ray is considered as X. After that, write down the measurement, which is 55 degree. Then move towards angle P. On angle P we have to, now we have done angle M, now move towards angle P. Angle P is equals to 105. So after 100 you have to count 5, mark it and join the line. Name this ray as Y. So the angle will equals to 105 degree. Clear, students? Now after this step, moving towards the next one. Now the angles are done, we have to move towards the sides. So how can we make the sides? We have to make the sides by the help of compass. You have to make an arc. Now from M you have to mark point N, which is equals to 4 centimeter. So you have to take a radius of 4 centimeter. Open a compass of 4 centimeter. And from point M you have to mark an arc. Now the intersecting point will be named as point N. After that, from point P, now the measurement is done. Now from point P you have to mark 3.8. From point P you have to mark O, which is equals to 3.8. So you have to open the compass of 3.8 centimeter. Then mark another arc. Now the intersecting point is considered as point O. MN is equals to 4 centimeter. OP is equals to 3.8 centimeter. After that, after getting the point M, after getting point N and O, you have to join them, because it is not a complete quadrilateral, so you have to join the intersecting points. Now the required quadrilateral is done, which is MNOP. Always kindly check the quality of your video. It must be 720.
Now moving towards the steps of construction. Steps of constructions are: point number 1, what we have done in the first point. First of all, we have draw the line segment. Draw line segment MP, which is equals to 4.5 centimeter. Students, you have to mention that the figure is based on 3 sides and 2 include angles. First is draw line segment MP, which is equals to 4.5 centimeter. Then what we have done the next step, we have marked the angles of 55 degree and 105 degree. So you have to write down, draw the ray, draw the rays MX and PY such that angle PMX is equals to 55 degree and angle MPY is equals to 105 degree. Now the third point will be with M as the center and radius 4 centimeter, draw an arc intersecting the ray MX at a point N. Then point number 4, with P as center and radius 3.8 centimeter, draw an arc intersecting the ray PY at point O. Now the last point is point number 5, join NO, so MNOP is the required quadrilateral. Is there any issue in this question, students? I am repeating the question again. Draw a line segment MP of 4.5 centimeter. First of all, you have to draw the line segment of 4.5 centimeter. Then the next point is, and you have to name them MP.
because we have drawn the rough sketch of this figure. The rough sketch of this figure is, we have taken P, M and P as a base because both are containing different angles. So after that, what we have to do? We have to mark an angle of 55 degree. The second point is, draw the rays MX and PY such that angle PMX is equals to 55 degree and angle MPY is equals to 105 degree. After that, what we have to do? You have to make 55 degree from angle from M and 105 degree from P. So join the line. Basically this ray is considered as Y and from M it is considered as X. After that, students, with M as a center and radius 4 cm, draw an arc intersecting the rays MX at point N. Now you have to open a compass of 4 cm. From M you have to mark an arc which is equals to 4 cm and intersecting point is considered as N. After N, from point P, which is the fourth point, with P as a center and radius 3.8 cm, draw an arc intersecting the ray PY at point O. Now from P as a center, you have to mark an arc of 3.8 cm. From P you have to mark an arc. The intersecting point will considered as point O. Mention the measurement, which is 3.8 cm. After that, the last point is join NO. After getting point O and N, you have to join these points. Then M and O is the required quadrilateral. No, Abu Bakr, question number 2 is not included. You just have to complete question number 1, part A, B and C. Yes, Maria, you can draw a figure by the help of construction, but try to make the figure with the help of the given measurement. So it may be easy for you in papers. जब कंस्ट्रक्शन नहीं पेपर में तो कंस्ट्रक्शन नहीं आएगी ना, आपने मेजरमेंट से ही ड्रॉ करनी है, तो मेजरमेंट से ही ड्रॉ करने की आदत बनाएं. Laba, we have done part A yesterday. You can take the lecture from the recording. Okay, after that, students, move towards the next exercise, in which you have to draw another quadrilateral. Is there any confusion in this question? Just take a screenshot, then we will move towards exercise 10.3. Okay. Now in exercise 10.3, is on page number 161. Now student, in this exercise you have to complete question number 1, part A, B, C. We are
constructing question number 1 part C first, because we have done the figure of rectangles. So in part C you have to make parallelogram. It is little bit similar as the construction of rectangle. So we are going to solve it first, then we will inshallah on tomorrow we will complete part A and B, in which we have to construct the trapezium. We are going to make parallelogram first, in which two adjacent sides are given. The sides are given which is length of 5.5 centimeter and other one is 4 centimeter, and diagonal is given which is 6.5 centimeter. A parallelogram in which two adjacent sides are of length 5.5 centimeter and 4 centimeter, and a diagonal is of length 6.5 centimeter. Tahreem, we are starting question number 1 part C. First of all we will complete part C, because part C is little bit similar to the previous question. After completing this we will complete question number 1 part A and B. In part A and B you have to draw trapezium. So after completing part C we will solve part A and B. Yes, you have to draw all the construction on lining page. Okay, after that students, what we have to do? You have to make a rough sketch of parallelogram. Basically it is a parallelogram, and all the angles of parallelogram are equals to 90 degree, are less than 90 degree. When you come check the angles, it will less than 90 degree. So after that students, just name them as A, B, C, D, because the names are not given, so we have to consider the names A, B, C, D. Then what we have to do? The longest side is considered as the length and the shortest side is considered as the breadth. So the longest sides are A, D and B, C. So A, D is equals to BC, which is equals to 5.5 centimeter. Then the next one is B. AB is equals to CD, because they are representing the shortest side, so we have to consider it as 4 centimeter. Now the length of diagonal is given, so we can consider the diagonal as BD. So BD is equals to diagonal, which is equals to 6.5 centimeter.
Is there any confusion? Okay students, after that what we have to do, we have to start the construction of the parallelogram. Now AD is equals to 5.5 centimeter and CD is equals to 4 centimeter. So we have to construct this. Yes, you have to draw the diagrams on lining page. Okay, the first is A. We are constructing the parallelogram by the help of the given diagonal. The diagonal is of length 6.5 centimeter. BD is equals to 6.5 centimeter, as we also done the rectangle with the help of the diagonal. So what we have to do in that question, we have to take the diagonal as a base, and after that mark the arcs of the two sides. Then by taking now from B you have to form two measurement, AB and BC. Now BC is equals to 5.5 centimeter and AB is equals to 4 centimeter. So students, you have to mark AB and CD. On the above side we are marking point A, on the below side we are marking as point C. So now you have to open the compass of AB, which is equals to 4 centimeter. Mark an arc of 4 centimeter. Mark an arc of 4 centimeter. Then from point D we are marking this point A, so AD is equals to 5.5 centimeter. Now you have to open the compass of 5.5 centimeter. 5.5 centimeter. Just mark an arc. Now increase the previous arc so they will intersect each other. Clear? If you want to make a rough sketch, so you can make it in your copy. It will help you in the preparation of your paper. After that, students name them as point A. Now join the line. Join the lines. After that, you have to mark C on the below side. So from point B you have to mark the length of 5.5 centimeter. So open the compass of 5.5 centimeter. From 5.5 centimeter you have to mark an arc.
Then on point D and C and D is equals to 4 centimeter. So from point D you have to mark 4 centimeter. From point D you have to mark 4 centimeter. Now join the points. Name the point as point C. Now AB is equals to 4 centimeter. AD is equals to 5.5 centimeter. BC is equals to 5.5 centimeter. And DC is equals to 4 centimeter. Students, we have constructed a triangle which has adjacent sides are given and diagonal is given. But just tell me which condition it is based on. हमने पहले पढ़ा था 2 angles and 3 sides are given. So on which condition the triangle is the quadrilateral is based on? Now tell me the condition. Hurry up students, reply me. Basically, it is based on 4 sides and 1 diagonal. Four sides and 1 diagonal. When 4 sides and 1 diagonal is given, it means you can construct it easily. After that, move towards the steps of construction. You have to mention these points. First of all, mention these measurement. Just write down the heading of solution. All sides, 2 sides of parallelogram are equal. Clear? So AB is equals to DC, which is equals to AB is equals to DC, which is equals to 4 centimeter, and AD is equals to BC, which is 5.5 centimeter. Now moving towards the steps of construction. Beta, basically it is a measurement of each side of a parallelogram. Clear? Basically, we are mentioning the names of the sides. The names of the sides are not given in the question. So you have to consider AB and CD as a quadrilateral. So what we have to do, we have to name them with the sides. So it may easy for you to make the quadrilateral. After that, step number 1 is draw line segment BD, which is equals to 6.5 centimeter. What will be the first step? On the very first step, we have draw the line segment BD. Clear? Now the next step is place the compass on B and draw
an arc above and below BD. Clear? On point B, you have to mark an arc of 4 centimeter above BD, and on below side you have to mark an arc of 5.5 centimeter. Now the third point is place the compass on D and draw two arc above and below BD. Clear? On the same point D, we are following the same step. From D we are marking the arc which intersect the previous arc. Clear? Fourth point is name the intersecting point A above BD and join AB, which is equals to 4 centimeter, and AD, which is equals to 5.5 centimeter. Point number 5, name the intersecting. No beta, it is campus 1. Name the intersecting point C below BD and join BC, which is equals to 5.5 centimeter, and DC, which is equals to 4 centimeter. After that, point number 6, I am writing the point number 6 over there. Point number 6 is now A, B, C, D is the required quadrilateral. Yes, you have to complete this in maths copy. Clear, students? Now just take a screenshot of this construction. The rough sketch is A, B, C, D, in which the diagonal line is BD of 6.5 centimeter, AB is equals to 4 centimeter, BC is equals to 8 centimeter. Basically it is a rough sketch. Is there any confusion, students? Okay, students, we will complete
question number 1, part A and B on the next class. First of all, Irman Imran, the rough sketch will help you to make the fair construction. First of all, write down the solution, then write down the steps of construction, and after the steps of construction, on the next page you have to construct the figure. Assalamu alaikum student. How are you all? I hope all of you are fine and doing well. Okay, I want your feedback that what we were doing in our previous lecture. Okay, I'm trying to make it proper. Wait for a while.
The picture is clear, beta? Now you can see the picture of your study pack. And you can hear me properly. It's fine, beta? Okay. It means reading comprehension has been completed. I had given you home task for doing page number 33 and page number 34. Okay, beta. Thanks for replying me. And students, have you written the central idea of the poem? Okay. So if you have done page number 34 and 35 of your study pack, so right now we are moving towards our link unit. I have told you to open your book. I have told you to have your book, workbook with you, because we will start our link unit, which is unit number 6 of your workbook side, and its name is film reviews. Okay, I want you to have your workbook. I want you to have your workbook and open page number 58 and 59. We will study today. Okay, the title of film reviews you have for unit number 6. So all of you have the idea of film. So what is the meaning of reviews over here, beta? What idea comes in your mind by the word film review? If I break the word re and view, so what idea comes in your mind? It means that to have a look of something again. Review means to have a look of something again. So if I am talking about film review, so it means I am taking a look of that movie again. It means the whole lesson will discuss about a film or about a comment or suggestion, not suggestion, about the comment, Maria. Only we will discuss the comments what the viewers had about this movie, okay, or about the film. Right now in this lesson, about which famous film we will talk is let's have a look. Do you ever read movie reviews? This is the question. Your writer is asking, starting the lesson by asking a question that have you ever? Yes, exactly, Abdullah. The whole lesson is discussing about Harry Potter. But as you know, the Harry Potter movie has a series, a long series. How many series are? Have you watched it? So, does a bad review put you off seeing a movie you were looking forward to? Okay, if you read a bad review, film review about any kind of movie, so do you take interest in watching that movie? Definitely no. Reviews like the one below certainly did not prevent the fourth Harry Potter film from becoming a big success at the box office. In this lesson, you will read out a film review, and a film review
is discussing about the Harry Potter's series number 4th. Okay, Harry Potter I think have 8 series. The movie have number of series approx 8 I think. So in this lesson we will discuss the 4th series of Harry Potter movies. Okay, so this type of movies is a big hurdle in the success of Harry Potter, in the success of Harry Potter movie 4 series. Okay, this 4th film of this series never drew me in, and in fact the writer is explaining his opinion that this 4th film of this series never, you can say, produce or never take the attention of the writer. Why? I had a rough time becoming involved again in the lives of 3 main characters. Definitely, if you have seen the movie, so you have observed that 3 were the main character in the movie. It means the leading character, you can say. The number of the leading characters in the Harry Potter movies is 3. Okay, so the 3 characters, it was very difficult. Rough time means tough time for the writer to indulge himself in that movie. It was really hard for him to involve himself in that movie or in the life of these 3 characters. And what was the reason? The magic is missing from Harry Potter and Goblet of Fire. It means the 4th series has the name of Harry Potter and Goblet of Fire. This is the name of the 4th series about which we are talking in this lesson. Okay, so which of the thing was missing in that movie? Actually the series contains a lot of magic, but in this movie the magic was missing. Okay, the main issue, you can say, the main objection the writer is giving in this film review is that the magic is missing from the movie. So let's move towards page number 59. If you go to see it, if you go to cinema house or if you want to see it, the movie will refuse to allow you into the confines of Hogwarts and the life of its inhabitants emotionally. It means the movie will not is failed to get the attention of the viewers, or having a restriction, you can say, to involve emotionally with the characters. There are few problems in the movie that are making the viewers or facing the difficulty to involve themselves in these characters, in the life of these characters. Harry Potter and the Goblet of Fire seems to instead insist on being the special effects. What was the reason? That the viewers are not emotionally getting involved in the characters because of too much of special effects, computer effects beta, too much of special effects which are given to the Okay, so I was talking to you beta about yes, exactly. I was talking about the characters. It is very difficult for the viewers to involve in the life of the movie character because
there is too much special effects. It means the reality is very far. It means the real effects got dead in this movie just because of too much use of special effects which is given in this movie. Extravaganza. Extravaganza is a you can have the meaning of big show. It means the Harry Potter is considered is a very big show or a very famed or renowned movie, but the movie is failed to get the attention of the viewers. And for the first time in the series, those special effects diverted the actors. It means the actors were not so much important in the movie. The effects is considered as so much important. It means the importance are of the characters is less and the special effects are so much considered as important. The computer generated imaginary CGI, this is the abbreviation of it. A computer generated imaginary stood out clearly to the point that it's an easy task. It means there was too much used of computer generated effects, so that is the reason that the characters are less important for the movie makers. And not just in the flight sequence. Because of too much flight sequence and special effects, it was imposing that the characters and the reality of character is very much unimportant. Or the scenes with the dragon. Flight sequence, and there were too much scenes of dragon and flight sequence. To figure out what was computer generated, the effects are too invasive. What's the meaning of invasive? It means got in a way to this story. Actors are not important, as I was explaining that these computer generated effects are strongly expressing that the actors are not important, but the special effects are so much important. It means in the whole para, the writer is explaining that, the review writer, film review writer is explaining that the movie has made in such a manner that there was too much of use of special effects of computer. So and because of that use of too much special effects, the importance of the character decreased. So the people or the fans of Harry Potter wants to see the reality of the role, so that's why they are taking less interest in the movie. The actors play second fiddle, and that's not how I like my Harry Potter movies. So the writer is saying that the two of the reason, because of two of the reason, the writer didn't like the movie, because one reason is that the effects were so much important and the character was less important, and since the writer is fan of Harry Potter, so he want more real role of Harry Potter. Okay, moving towards the next para. Daniel Radcliffe, Emma Watson and Rupert Grint still fit to the role. These are the names of the real names of the people who are performing the three of the roles. One is Daniel is performing Harry Potter's role, Emma is Hermione, and Rupert is Ron. Perfectly, they are comfortable in their parts. It means that they were acting very nicely because they are used to of performing these roles. They were very comfortable in their roles, okay? And we are comfortable of watching them. It means the fans are very much used to of watching them.
you can't lay the blame for the film shortcomings on those three. It means that you cannot blame that if the movie is coming in a very short time period or back to back. So this is the reason of the failure or that the people are not taking so much interest in watching this movie. They are definitely growing up before our eyes, but they are not so much older than their characters. It means they are not so much shown as so much grown up in the character. It makes much of difference yet. It means there is a lot more difference because the movie is coming back to back, so the character are not growing up so much. The lack of connection didn't come from the actor. It means the writer is saying that the lackness, the flaws in the movie is just not from the side of actor. It came from the script. Where we have the flaw, we have the flaw in the script, and the script was failed to hold the audience. It means the script was not getting or grasping the attention of the viewer. So it means there was a failure from the script side. Okay, Harry Potter and the Goblet of Fire looks and feels staged. The word of the Harry Potter normally embraces moviegoers. It means there was nothing so much attractive, and it makes the moviegoers who are going to watch the movie in cinemas, they were very much disappointed by the movie. But this time around, their frustratingly impenetrable wall between the world of wizard and us ordinary folk. It means this movie has made in such a manner that it shows that there is a vast gap between the moviegoers and the movie makers. There is a far distance between them. It is showing that. Despite its faults, it means in the last para, when the writer is sum up the points, so he is saying that along with all faults, along with all flaws, you can say, Harry Potter and the Goblet of Fire is still a decent film. So Harry Potter is still considered as a decent movie because one that's sure to be please most Potter fans, because the fan of Harry Potter still love to watch this movie, whether it has any kind of flaws or whether it has a special use of special effects whatsoever. But the Harry Potter fans like to watch it. It just didn't enthrall me. It means the writer is saying that the movie doesn't fascinate me, but I wish there was more emphasis on the human. In the end, the meaningful sentence, the writer is saying that the movie makers should emphasize on the human in the film, and they should less emphasize on computer generated effects. Okay, so if I want to give you the quick review, so I can say that the whole lesson is discussing about Harry Potter and Goblet of Fire, the fourth series, but the review is giving an impression that the movie is not so much real, although the characters. What rubbish you are talking about? Stop chatting with each other. Who is multi-tent maker? And Abdul Ahad. We are noticing the thing and we can call your parents, okay?
It's very easy to recognize you. Abdul Ahad. Okay, now focus on the lecture. So I will summarize the point of the lecture or the lesson, that because of too much use of computer generated effects, the human importance or the importance of the character is very much less in the movie, and the magic was missing from the movie, and the character was there was no mistake from the characters or actors. The script was very much weak, so that's why it was failed to get the attention of the viewers. And in the last, the writer is saying that the writer is saying that although the movie has so many flaws, but it still fascinates the fans of Harry Potter, because in the next time or in the end, the writer is also giving a suggestion that in the next series, the movie makers should emphasize on the human and less on the computer generated effects. Okay? Now we are moving towards the reading comprehension of this lesson. Okay? So open page number 60 and 61 for doing reading comprehension. The main point of the first paragraph is, there are 4 options given. I am reading. So reply me in the chat box that which one is correct. The writer had little interest in the fortunes of the main characters. The writers got bored by all the special effects. There were not enough magic tricks in the story. The 4th film was not as good as the previous 3. Which option is correct? Okay, waiting for your reply. Quickly reply me. Yes, exactly, D part, because the 4th film was not as much good as the previous 3. That's good. Yes. Now moving towards question number 2. Not B part, beta. D is correct answer. Now, which of these statements is true according to the writer? Moving towards the next question, question number 2. Which of these statements is true according to the writer? The special effects generated by the computer were awesome. The special effects dominated the movie, so she lost interest in the story. You could not easily tell which of the effects were computer generated. Okay, now tell me, which one is true according to the writer? The first statement is false. Okay. B. B is correct or true. C is false. And the D part is also false. Now moving towards question number 3. Which of these words best describe the writer's feeling about the movie? 4 of the options are given. So, in your opinion, which one best describe the writer's feeling about the movie? I'm talking about question number 3. Delighted, disgusted, frustrated, or amused? Yes, exactly. B option is correct. The writer got very much exhausted or frustrated.
The writer was very much frustrated, not delighted by seeing the movie. Okay? That's good. Now move towards question number 4. Students, move towards question number 4. Explain in your own words what the writer feels about the fact that the actors playing the main roles are actually older than the characters they portray. It means what the writer feels about the fact actors play the main roles are actually older than the characters. Actors are young and they are playing the role of older than the characters. So how the writer was feeling this? So you can write that actors are not much older than the character. Actors are not much older than characters, so it doesn't make any difference. I am repeating again. Actors are not much older than characters, so it doesn't make any difference. Now move towards question number 5. The writer described the movie as a decent movie. After several paragraphs of criticism, it means writer was continuously criticized the movie or describing the faults of the movie, but in the end he was saying that it was decent. What do you think she thought was decent? What was the thing she thought is decent? What is the decent thing in the movie? Why does she say that Harry Potter fans will like it anyway? It means why she was saying that the Harry Potter fan will like it. Yes, Hassan Ghazi, your answer is right. But I am talking about question number 5 now. So why the writer was using the word decent movie, since she is explaining a lot of mistakes or she has criticized the movie. So you can say that Potter fans probably ignore the fault. If I am a Harry Potter fan, so I can ignore the faults of the movie and I will watch the movie because I like the work of the actor. So in this way I can write the answer of this question. Potter fans probably ignores faults. They like works of actors. Not only she likes the role of in the movie, they always love to watch Harry Potter movie. Okay, so they love the character of Harry Potter. So that's why the writer is ignoring the mistakes or ignoring the flaws of the movie. Harry Potter fan probably ignore the faults. There is a correction in the spelling Hassan Ghazi. Yes, exactly, Malia. She thinks that the actors played very well, but the script was weak. Fans can ignore the mistakes of the actors, not actors, of the movie makers, okay? So they love to watch Harry Potter. Now we are moving towards question number 6. Explain in your own words. Now beta focus on question number 6. Explain in your own words what each of these phrases means in the passage. So you have to find out
what these phrases refers to in the passage, or what is the meaning of these phrases in the passage. Okay, question number 5, I am repeating again. Azhar, Potter fans probably ignores mistakes or faults. They like work of actors. Now we are moving towards question number 6. Explain in your own words what each of these phrases means in the passage. The first phrase is this: drew me in. Drew me in. What's the meaning of the phrase? Or why the writer is using? What's the meaning in the passage? Drew me in. Come on, reply me, students. I am waiting for you. To take attention. Sarim is saying that to take attention. Rather attention, yes, it's very good to take interest or involve. Okay? Interest or involve. Yes, exactly. Not get attracted. You can write make me interested and involve me in story. Okay? How you can write? Make me interested and involve me in story. To make person involve. Okay? To attract hoga beta. It's attract. To attract sometimes. Okay. You people got the idea of the phrase drew me in? It means make someone to take interest or involve in something. Okay. Now move towards B. A rough time. A rough time. What's the meaning of rough time in the passage? A rough time means meaning of phrase rough time. Yes, exactly. Find it difficult. Very good, Malia. Having a tough time, you can say, or having a tough experience. Difficult time, hard time, you can say. Difficult situation, difficult time, hard time, these are the correct meaning, okay? Okay, now move towards C. The flight sequence. What does flight sequence refers in the passage? What is the meaning of flight sequence in the passage? Come on, quick. Your online classes will end on 18, beta. Friday, 18. Exactly, it's Naiman. A part of movie in which character flew in air. That's very good. The part of movie in which the character flew in. Or Malia is saying those parts of movie in which character fly in air. Asfa is saying a rough time. Board time. Asfa, your reply is so much late. We are talking about C phrase, okay? Now, we are moving towards D part. That's very good, Ariba Ijaz. Now, we are moving towards the D, at arm's length. At arm's length. Salik, stop. We know that when the period will over. Focus on the lecture. If you don't want to take it, you can go or disconnect the line.
At arm's length? Yes, beta, I'm waiting for your reply. Yes, very good. At a distance? Very good. At a distance? Okay, beta. Now, we have completed today our link unit. All the work of the reading comprehension should be done in the study pack. Oh, sorry, in the workbook side. Okay, where you have to do the reading comprehension in the workbook side. Okay, on page number 60 and 61. So that's about your link unit, and the period is getting over from my side. Do good care of yourself, and Allah Hafiz.